if you fit the character, I think that is what matters. Then followers or all of these things really, how popular you are on social media, I think that really doesn't matter. Overall, I think the quality has improved, our content and otherwise also filmmaking in India. As long as I can see, I can clearly see we are growing in a right direction. पहले ना फिल्में या कहानियाँ एक दावत की तरह होती थी, हफ्ते में एक बार होती थी, महीने में एक बार होती थी. अभी हो गया कि अब नाश्ते की तरह सेवपुरी जैसी हो गई है. Hello people, my name is Reema Chhabda and you are watching OTTplay. And today for a super fun conversation, we have with us the talented team of Half CA. Hello. Hi. Which by the way is a very interesting name और इसके पीछे की कहानी हमें बताएंगे ये प्यारे से चेहरे. Please. Half CA. Go for it. Half CA एक्चुअली एक टर्म है जो CA कम्युनिटी में यूज़ किया जाता है. वो बेसिकली यही होता है कि क्योंकि जो CA का कोर्स है और एग्जाम है, इट इज़ सो डिफिकल्ट that it takes multiple attempts to clear it. You have to be extremely lucky, and there are very rare cases where you get through in the first attempt. But most cases में आप 2-3 attempts देते हो और उस दौरान आप you know everything about about being a CA. You're probably also very good at it. You're working as an intern somewhere. आप articleship कर रहे हो. But on stamp, officially you're not a CA. You can't really sign as a CA. So those people are called half CA. Interesting. Yeah, so that's actually the real meaning behind it, and more things will unravel once you watch the show. Basically, you're there but not there. Yeah. Okay, got it. I'm sure. Also, when I think about my college days and school days, whenever people used to or my parents used to talk about कि CA करना है क्या, मतलब वो क्वेश्चन ही इतना डिफिकल्ट होता था सुनने के लिए. खैर मैंने तो कभी किया नहीं है, of course therefore we are sitting here. But जो मेरे क्लास में करते थे या कुछ भी होता था तो वो लोग हमेशा पढ़ाई करते रहते थे. तो ये टर्म हमेशा से बहुत स्कैरी रहा है फॉर पीपल हु आर डूइंग इट और हु आर नॉट डूइंग इट. तो जब आप लोगों ने हाफ CA टाइटल अपने शो का सुना तो आप लोगों का इनिशियल रिएक्शन क्या था? विल स्टार्ट विद यू. हाफ CA बहुत कैची नाम लगा था मुझे, क्योंकि मैंने नहीं सुना था, क्योंकि मैं अकाउंट बैकग्राउंड से हूँ नहीं, कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो मुझे नहीं पता था कि हाफ CA करके भी कुछ टर्म है जो लोग शायद उस कम्युनिटी में एक दूसरे को कहते होंगे. तो मुझे लगा CA हाफ CA, but when I got to know about the concept कि why is it called half CA, then I thought कि this is the most appropriate name of the show, and yes, it was amazing to see how that team, whoever came up with this name, half CA, is quite catchy also. Yes, otherwise yes, sound course wise, of course it's very interesting. Yeah. Also there's a very nice line that you say in the trailer कि ये दिन वापस नहीं आने वाले हैं कॉलेज के. तो आप लोगों के लाइफ में कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कुछ स्कूल में या कॉलेज में ऐसे कुछ चीजें रह गई है जो अभी वो आप लोगों ने इस शो के दौरान शूट करते समय पूरी कर ली है? नहीं, मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी. मैंने अपनी कॉलेज लाइफ का कोना एंजॉय किया है. आपकी ना शक्ल से ही लगता है बहुत ही नॉटी किड हो. मतलब पहचान जाते हैं एक बारी में. मैंने कभी फेस्ट में पार्ट नहीं लिया था. ओके. एज अ वॉलंटियर. तो और इस बार ये शो में एक्चुअली इनवॉलंटरी पार्ट होती है. वॉलंटियर आर्ची तेजस के साथ मिलके कॉलेज फेस्ट में पार्ट लेती है और वो सारी एक्टिविटीज करती है. तो आई थिंक दैट वाज द मोस्ट फन पार्ट आल्सो टू शूट. हमने साथ ये पूरा कॉलेज फेस्ट वाला जो सीक्वेंस था हमने साथ में शूट किया. इट वाज एक्चुअली वेरी फन. तो वो सारी चीज़ें जैसे पोस्टर्स लगाना, आर्ट खुद करना, बैनर्स लगाना, पढ़ाई के अलावा सब कुछ. बेसिकली पढ़ाई के अलावा सब कुछ काम करना जिसके लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे आपको. पर क्योंकि आप अपने दोस्तों के साथ काम करते हो. राइट. तो वो बहुत दैट वाज एक्चुअली कॉलेज फेस्ट होता क्या है? बेसिकली काम कराते फ्री में. ट्रू. व्हाट अबाउट यू? No, so क्योंकि इसमें तो आप आई थिंक आधे, मतलब जितना मैंने ट्रेलर में देखा, यू लुकिंग वेरी सैड. तो आई एम श्योर कि वो सैड पार्ट तो नहीं ही होगा हाँ, कॉलेज तो मतलब टाइम वैसा पे. कॉलेज लाइफ तो नहीं चाहूँगा. बट हाँ, मतलब मुझे लगता है शायद मैं इतना अच्छा जितना नीरज गोयल जिस तरह का स्टूडेंट है, अगर इस तरह का स्टूडेंट में होता शायद अपनी कॉलेज लाइफ में तो बेहतर होता.
ओके ऑल्सो स्टोरीज अराउंड स्टूडेंट लाइफ एंड कॉलेज रोमांस, ये सब हम लोग स्क्रीन पे हमेशा से देखते आ रहे हैं, बट डू यू ऑल्सो थिंक कि अब जो कॉलेज रोमांस होता है उसमें कैरेक्टर्स भी अच्छी तरह से डिफाइन होते हैं, स्टोरी का नैरेटिव होता है वो वेल रिटर्न होता है, और ना कि सिर्फ एक नॉर्मल सा सीन जिसमें सिर्फ कॉलेज रोमांस दिख रहा है, यू एक्चुअली सी अ स्टोरी अराउंड इट. डू यू थिंक कंटेंट इज चेंजिंग बिकॉज OTT हैज बिकम अ न्यू अ सिनेमा हॉल? For sure, for sure. That is there for everyone to see and witness the change that has come in our content. In fact, everything else also, the kind of actors now you get to see on these platforms. Yeah. It's amazing. Overall, I think the quality has improved. Our content and otherwise also filmmaking in India. As long as I can see, I can clearly see we are growing in a right direction. Also, I feel because you get more time to tell a story and dwell into every character and I mean, in a film, you have to tell a story in like 2 to 3 hours. आजकल तो उतना भी नहीं होता है, लोग 1.5-2 घंटा ही बैठ पाते हैं, I think. Correct. But आप एक through OTT and through a series, you're able to tell one story in 5 to 8 episodes. Right. So you're able to tell more, you're able to explore more and बहुत डीपली आप हर चीज को बता पाते हो, एक्सप्लेन कर पाते हो. तो आई थिंक दैट इज व्हाई यू फील कि व्हेन यू टॉक अबाउट स्टूडेंट लाइफ, देयर इज, वी फील दैट देयर इज सो मच ओनली वी कैन टॉक अबाउट इट, बट देयर इज एक्चुअली अ लॉट दैट नीड्स टू बी कवर्ड. एंड like even like our show, we talk about the entire CA course, and हमें लगता है कि CA कोर्स के बारे में कितनी ही बात कर लेंगे. Also काफी ओपन हो गया है कि अब अलग अलग एज ग्रुप के लोग राइटर हैं, और कई बार ऐसा होता है, जैसे खुशबू हमारी जो राइटर हैं, शी इज अ CA, तो अब उससे ज्यादा कौन समझेगा उस पूरे वर्ल्ड को. She's a first attempt CA. Oh wow. So, and she decided to become a writer. Yeah. So, Wow, an wonderful. amazing one. Yeah, All three of them. I'm sure. Yeah. And also, as we talk about quantity and quality, OTT platforms ने बहुत सारा लोगों को space दिया है to portray their talent. But do you also feel कि इस वजह से बहुत rush भी हो गया है कि जो लोग actually without any talent Instagram पे social media के through या कहीं से भी famous हो गए हैं, उन लोगों के बीच में आप लोगों को struggle करना पड़ता है to show your real talent? नहीं यार, मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो लोग फेमस है वो टैलेंटेड नहीं है. आई थिंक वो अगर फेमस है तो उनमें कुछ तो बात होगी. उनमें लाइक इवन लाइक ऑन सोशल मीडिया देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सो पॉपुलर एंड सो फेमस, एंड इवन इफ दे आर मेकिंग लाइक 30 seconds का रील, दे आर showcasing their talent on such a like a fixed or like a restricted manner, but they are able to say so much. So पहली बात तो वो, और कहीं भी ऐसा आई डोंट थिंक हमें कभी तकलीफ हुई है उनके बीच में ऐसे कि उनको मिला, या आई थिंक सबको फेयर चांस मिलता है. एंड व्हेन इट कम्स टू सीरीज एंड फिल्म्स, आई फील लाइक एट द एंड ऑफ द डे how good you are at what you do, and if you fit the character, I think that is what matters. Then followers or all of these things, really how popular you are on social media, I think that really doesn't matter. I mean, that is a plus point, obviously. But if you're not fitting the character, or if you're not talented enough, I think you will not be able to pull through it. And everybody is getting a chance. I feel like I think it's a blessing in disguise कि everybody is able to get an opportunity. And somebody now we're just not restricted to auditions. We can just put like a 30-second reel and probably lip sync to an old scene, and put it in, give our touch to it. Like anybody can give their touch to it, and it's out there, and thousands of people are watching it, and they're seeing how talented you are. So I think that's a great opportunity for like everyone to be on social media. I think social media is a great thing for actors. And you both agree to what she said? More or less, yeah. Yeah, I would just like to add कि हमारा सेंस ऑफ अप्रिशिएशन कहीं लॉस्ट हो गया है, क्योंकि पहले ना फिल्में या कहानियाँ एक दावत की तरह होती थी. हफ्ते में एक बार होती थी, महीने में एक बार होती थी. अभी हो गया कि अब नाश्ते की तरह सेवपुरी जैसी हो गई है. जब भूख लगे कंटेंट मिल जाएगा. हर 2 घंटे में आप खा सकते हो, हर 2 घंटे में कुछ नया देख सकते हो, कुछ आ सकता है. तो और इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, आई थिंक हर जगह पे हर किसी ने अपना सिनेमा घर खोल दिया है. तो अगर आप किसी एक पर्टिकुलर, जैसे प्रजक्ता कोहली मेरी फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है, अगर मैं उसकी प्रोफाइल पे जाता हूँ तो उसका वो सिनेमा हॉल है, मैं उसका सारा कंटेंट देख सकता हूँ, उसकी सारी फिल्में देख सकता हूँ एक साथ.
It's as good as me being a fan of a bigger actor or a bigger actress. And see what Tom Cruise can do that maybe a Pankaj Tripathi can't do, but what a Pankaj Tripathi can do that nobody in the world can do. So we have our own fortes and own strong suits, and we are absolutely great at it. And rightly what ऐसा said कि अगर आप famous हो तो किसी वजह से famous हो, या तो आप one shot famous हो कि एक बार famous हो गए, आपकी एक रील पे शायद 10 मिलियन व्यूज आ गए और फिर आपका कोई अता पता नहीं है. पर आप अगर कंसिस्टेंटली फेमस हो तो शायद आप में कोई बात है और आपकी एक ऑडियंस है, और अगर वो पसंद कर रही है तो कर रही है. तो देयर इज नो टू वेज अबाउट इट. ट्रू सो ट्रू. चलो लेट्स टॉक अबाउट हाफ सीए. क्या ऐसा कोई एक चीज़ है जो आप अपने साथ लेकर जा रहे हो और जिंदगी भर आपके साथ रहेगी, ऑन सेट, शूटिंग के टाइम पे, बिहाइंड द सेट्स, एनीथिंग? ये दोनों कमाल की जो एक्ट्रेस से मैं मिला और इनको जो जाना, तो मुझे बड़ा मजा आ गया. अभी कैसे जाना मैंने इतना भाई, जब तुम तैयार व्यार हुई थी, हमारी अपनी पॉडकास्ट चल रही थी. तो I am mighty impressed, and as an actor you keep learning from other actors, other crew members, even if it's an AD for that matter. वो आकर आपके कान में आके कुछ बोल के जा रहा है. That's a critic, that's an audience right there. Right. So I think that's a lot of memories for 2 days of shoot. But yeah. What about you? For me, few people who I met on this set, Pratish, Prashant, Ashwin to name with, Ahsaas. Of course, Prit I got to interact later, but yeah, some of the people I met, I think we're going to be close for quite some time. Yeah. Okay. Lastly, I would like to know कि आप लोगों की क्या future projects है जिसके लिए हम लोग और excited हो इसके बाद? हाफ सीए सीजन 2. मजाक कर रहे हैं सब इसलिए. Fingers crossed. Hopefully. I'm sure ये शो चल जाए और नेक्स्ट सीजन में हम लोग यही बैठ के वापस इंटरव्यू करें. और Amazon मिनी टीवी पे आ जाएगा, वो बिल्कुल मुफ्त में आप देख पाओगे. 26th of July. Yes, 26th of July हमारा सीजन 1 आ रहा है. उसके बाद फ्यूचर प्रोजेक्ट बताओ, एहसास बताओ अपना. कौन सी दूसरी? TVF यूनिवर्स का पूरा यूनिवर्स इसने ले लिया. TVF का. True, so true. सारे हॉस्टल कोई कॉलेज छोड़ दिए, उस यूनिवर्स का चांद है. इनको सारे कोर्स करने हैं, इनको हर जगह जाके स्टूडेंट बनना है. मुझे लगता है मेरा हो गया. इसलिए मेरा लास्ट कोर्स था. But listen, Ahsaas, because of this, do you also fear about getting typecast? Yeah, I do. I'll be very honest with you, and I feel somewhere I have already been typecast. But yeah, I'm saying this is probably my last course. Okay. The next course you will see me is probably something else. Okay. अच्छा, एक और बात. So, as we all know that you have worked with a lot of actors as a child artist, but there is this one thing that I want to ask you ki you have worked with the biggest superstar of Hindi film industry, that is Shah Rukh Khan, and he's been all over the news since a very long time, since Pathaan and now Jawan. So what was, I know you must be very young when you shot with him for Kabhi Alvida Naa Kehna, but what was that one thing that you still adore of him, and like, how was your experience? I want to know everything that happened with you and the Shah Rukh Khan. You also asked me this question, no? I think someone. I'm always the biggest fan. Yes, always. he also. I think we all are. Who is not a fan of Shah Rukh Khan? Yes, true. I'm a bigger fan. I am a bigger fan. Okay, guys. See, like you said, I was 6 years old when I shot that film, so I don't have that many memories. But I know for sure that he was the most humble person on set. He was the most hardworking on set. And he used to pamper me a lot. I remember it was Diwali day and हमारा turf पे scene चल रहा था, and I was कुछ तो scene था, and I did it, and he was the first one to start clapping for me on set, and then everybody else followed. So I remember this was, and I used to also make him cards. So bachpan mein I used to like make him cards, draw him, and it was like, I love you Shah Rukh sir, all these things, and I used to give it to him, and he used to keep it with him. And he used to show everybody. So ऐसा नहीं था कि हाँ देखा रख लिया. Like he was somebody who would show it. Like अगर साथ में उनका कोई assistant बैठे हैं या makeup artist बैठे हैं, उनको दिखाते थे वो हमेशा. And he would always come say hello to my mom. She was always with me on set. Make sure, like, even if we are here and my mom is somewhere there, he would go up to her and say hi to her. So that's how humble he was. I mean, को इतना गुस्सा आ रहा है ना अंदर से. मैं क्यों नहीं था वहाँ. नहीं मैंने उनके साथ बहुत मतलब मिला हूँ. बहुत काम किया मैंने, बहुत काम किया. नहीं, so I did 2 shows where I was hosting, Dil Hai Hindustani and Arrived.
So on both the shows he had come to promote his films and हम लोग ने 8-9 घंटे साथ में बिताए थे. Wow. Both the times, and before that also एक बार वो तारक मेहता के शो पे शूट कर रहे थे और मैं पहुंच गया था सेट पे. One of the cast member was a friend of mine. तो he said कि आजा आज सर ना प्रमोशन के लिए आ रहे हैं. अच्छा. तो मैं पहुंच गया था and that time I didn't work with him or didn't know, I mean there was nothing like that. So I'm very genuinely happy like when listening to her. Why would I be upset? Yes. Lovely. So are you This like is manifesting to work with him again? Yes, absolutely. I would want to work with him so much. I've auditioned at Red Chillies multiple times. It's never happened. It's never worked out. But I hope something works out and I get to work with him. I'm sure. अब तो आर्यन भी डायरेक्ट कर रहे हैं तो अब तो और चांसेस बढ़ गए. Amazing. Thank you so much guys and all the best. Lovely talking to you. Thank you.